Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Drive NewsBrake, where we bring all the latest breaking news from the world of cars and motorcycles. And today we are going to talk about a motorcycle which is being announced right now. हो सकता है अगले साल आ जाए. And this is from a British brand जो आमतौर पर प्रीमियम बाइक्स बनाती है, लेकिन वो कह रही है कि एक नया डायमेंशन ऐड करना चाहती है वो न्यू जनरेशन बाइकर्स की लाइफ में, और इसी वजह से वो लेकर आ रही है Trident. We are talking about the Trident. Triumph is bringing the Trident next year, और इंडिया में वो किस कीमत पर आएगी, क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या फीचर्स हैं, क्या एक्सक्लूसिव चीजें हैं, और कंपनी इसके बारे में क्या कुछ सोच रही है. सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज एस्पेक्ट्स, एंड इन केस यू आर वाचिंग अस फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बार फिर से आपको बता दें, टाइम्स ड्राइव इज अ बंच ऑफ एंथुसियास्ट जो लेकर आते हैं न्यूज, व्यूज और रिव्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड मोटरसाइकिल्स. और हमारे YouTube चैनल को आप इन सभी अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टाइम्स ड्राइव के YouTube चैनल को. और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, इसके ऊपर तो हमारे अकाउंट्स हैं. लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पर फटाफट मिल जाएंगे टाइम्स ड्राइव से. दिस इज वन यूनिक प्रोडक्ट जिसे आपने कैमोफ्लेज कम और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाइट कलर कोड के साथ इसके इमेजेस आपने काफी देखे होंगे, और वही टीज हो रहा था. एंड नाउ द रियल ट्राइडेंट इज इन फ्रंट ऑफ अस. और इस बाइक को लेकर सबसे पहला सवाल जो इंडियन बाइक एंथुसियास्ट शायद पूछ रहे होंगे, उसका जवाब आपको बता दें. नो, दिस इज नॉट दैट बाइक जो हम बजाज और ट्रायम्फ के गठबंधन से, पार्टनरशिप से जो देखने वाले हैं एक छोटी बाइक. दिस इज नॉट दैट बाइक. तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा. This is an effort by Triumph to get into a different kind of price zone, new kind of riders and new kind of experience. और इसी वजह से हो सकता है कि ये सबसे सस्ती आपको Triumph बाइक देखने को मिले. अलग अलग प्राइस रेंज बताया जा रहा है, बट मे बी इट कैन स्टार्ट अराउंड 6.5 lakhs, और उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वाकई वो इस कीमत में आ रही है कि नहीं. सो द न्यू Triumph Trident is coming in the roadster family. In case you're familiar with Triumph families, different families, so you know one is roadster, one is modern classic, one is adventure, and there is different category of rocket. So that is different, but this is coming in that roadster category where you already have speed triple, street triple, RS versions, and this is also a 3-cylinder engine, 660cc engine, which is producing around 80 bhp of power and around 64 newton meters of torque. And now let's talk about tech specs. And if you want to understand what kind of body chassis this bike has, so we'll just let you know. The frame is tubular steel perimeter frame, and the swing arm is twin-sided fabricated steel. The Trident also gets a slip and assist clutch. We don't know the top speed or 0 to 100 speed yet, but as we told you, this is 660cc engine, around 80 bhp of power output and 64 newton meters of torque. One aspect most of the Indian riders are asking these days is the seat height, and that is around 805 mm. Trident comes with a 14-liter fuel tank. And now some safety and other equipment, let's talk about that. This comes with 2 riding modes, road and rain. It also gets switchable traction control and ride-by-wire, yes, ABS as well. Triumph Trident gets 17-inch cast aluminum wheels. This will be available in 4 different colors. And now the suspension. Front suspension is 41 mm upside down forks with travel of 120 mm. And the rear is monoshock with preload adjuster and travel of 133.5 mm. And now the braking setup. The front brake is twin 310 mm floating discs, and the rear is 255 mm disc brake. Triumph Trident gets a totally new TFT display. It also has a connectivity app which is called My Triumph Connectivity, and obviously it also gets lots of different accessories. Big bikes also mean that the service and maintenance package would be bigger, but in this case what Triumph is offering, what we have heard on a global level, is a 2-year unlimited mileage warranty, and the service interval is 16,000 kilometers. So what do you think about this bike, and what should be the ideal price for this bike? Do let us know in the comment section, and filhal, bye bye from Team Times.